Assalamu alaikum. Dear students of class 4, this is your social studies teacher Fatma. Now you are in class 4 and this is your new social studies book. After watching this video, you will be able to answer the questions which I'll be asked at the end. So make sure you have your rough notebooks with you to note down the questions. Today we are going to start first lesson from unit number 1, geography. Geo means earth and graphy means study. So geography means study of the earth. Our new lesson name is the earth in space. Dear students, this is earth and we all are living on the earth. We have 5 oceans and 7 continents in the earth. Ocean means a large body of water and continent means a large body of land. Dear students, the earth is in space. This is earth and we are living on the earth and the earth is in space. There is moon, sun, other planets and other stars in the space. Dear students, the earth is like a huge ball. Huge means big. It is not quite round but flattened at the top and at the bottom, to the North Pole and to the South Pole. Today we know quite a lot about the earth, the other planets, the sun, the stars and space with the help of astronauts. Do you know what does astronaut mean? Astronaut is a person travels in a spacecraft. Space probes and satellites are machines sent into the space to find out more about the universe. What is space probe? Space probes are spacecraft with special cameras, but satellites have also special cameras. The difference between space probes and satellites are the space probes don't go round the earth, but satellites go round the earth or orbit the earth. And the other difference is satellites are much heavier than the space probe. Now, page number 3. When we talk about Earth and its movement, we use some special words. And the words are, first is orbit. Orbit means the path of the Earth. Orbit means the path of the Earth round the Sun. Dear students, Earth has its orbit round the Sun and Moon has also its orbit round the Earth. Remember, Moon is the natural satellite of Earth. Other planets also have their orbits round the Sun. Dear students, ऑर्बिट की एग्जाम्पल मैं आपको रोड से दूंगी. जिस तरह गाड़ियों का अपना रास्ता होता है जिसे रोड्स कहते हैं और रोड की साइड पे पेडेस्ट्रियन का अपना रास्ता होता है. पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल चलने वाले. उसे क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन के रास्ते को फुटपाथ कहते हैं. इसी तरह प्लैनेट्स का भी अपना रास्ता होता है और उस रास्ते को कहते हैं ऑर्बिट. क्या कहते हैं? ऑर्बिट. द पाथ ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिट. नाउ we'll talk about the axis.
This is an imaginary line running from North Pole to the South Pole through the center of the Earth. Equator. Equator is also an imaginary line running from west to east round the middle of the Earth. Equator divides the Earth into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. Hemi means half. So this is half of the sphere, means you know the shape of Earth is sphere. So hemisphere means half part of the Earth. This is northern hemisphere and this is southern hemisphere. Now, cardinal directions. There are 4 cardinal directions. I will show you with the help of this chart. Okay, we have 4 cardinal directions: north, south, west and east. And we have also 4 intermediate directions: northwest, northeast, north southwest, southeast. Rotation. This is rotation. Okay, move the movement of the Earth. This movement of the Earth. This movement from west. This is west. From west to east. This is called rotation. And this rotation takes 1 year. This rotation takes 24 hours or a day to rotate once, and the Earth rotates on its axis. The Earth rotates on its axis. Okay, and at the same time, when it rotates, it also revolves around the sun. Earth also revolves around the sun. Now, also I've told you that what is rotation. At the time when it rotates, it also revolves around the sun. Remember, dear students, remember these 3 things. Okay. Number 1, the Earth rotates on its axis, and it takes 24 hours or 1 day to complete its rotation, and this movement of the Earth is called rotation. Okay, at the same time when the Earth rotates, it also go round the sun, and this movement of the Earth is called revolution, and it takes 1 year or 1 year to complete this revolution. We have different seasons due to this revolution. The third thing is the moon also go around the Earth, and the movement of the moon around the Earth is called revolution. It takes 28 days to complete. I will explain day and night with the help of the torch. Suppose this is sun and this is the light of the sun. The side of the Earth which faces the sunlight has day, and the other side, you can see, there is dark. So the other side doesn't face sunlight. It means it has night. Now see, this is Australia and it faces the sunlight. So it has day. But on the other side, there is Brazil and it doesn't face the sunlight. So there is night. Now look, the earth rotates
from west to east. Okay, with this rotation, now Brazil faces the sunlight and Australia doesn't face the sunlight. So there is day in Brazil and night in Australia. So rotation causes day and night. Dear students, एक और बात भी आपको बतानी है कि लाइट से ये जो सनलाइट इसको फेस कर रहा है, ये वाला सरफेस, एक बात तो ये है कि यहाँ पे दिन होगा इस वजह से। एक दूसरी बात, ये जो सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है सनलाइट, यहाँ पे भी सनलाइट जा रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़्यादा ये जगह ज़्यादा चमक रही है, इसके मुकाबले ये जगह ज़्यादा चमक रही है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी रोशनी आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। Dear students, those countries which are close to the equator line, okay, this is equator, which are close to the equator, their climate is hot throughout the year. Those countries which are far from the equator, वो countries जो equator से दूर है, ठीक है, यहाँ पर जो countries हैं वो hot नहीं होंगी, लेकिन जो कंट्रीज इसके नज़दीक हैं वो क्या होंगी? द क्लाइमेट ऑफ दीज कंट्रीज विल बी हॉट। ओके, इस तरह होगा ऐसे क्यों? क्योंकि सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ ज़्यादा ये चमक रहा है, ये वाला एरिया ज़्यादा चमक रहा है, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है सनरेज, और यहाँ पे सनलाइट इतनी नहीं पड़ रही। दैट्स वाई द कंट्रीज विच आर क्लोज टू द इक्वेटर आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज इक्वेटर. This is an imaginary line called equator, and it divides the earth into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. If there is winter in northern hemisphere, so in southern hemisphere there will be summer. If there is winter in southern hemisphere, so in northern hemisphere there will be summer. मैं आपको इसकी एग्जांपल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से देती हूँ, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि यू नो द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड यू नो द सीजन्स ऑफ समर एंड विंटर सीजन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तानी। जितनी भी नदर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज़ है तकरीबन सबका यही सिचुएशन है, यही लॉन्गेस्ट है, यही हमारे साथ ही समर है, हमारे साथ ही विंटर है, जैसे जून में समर और दिसंबर में विंटर। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में सिचुएशन चेंज है। कौन सा सीज़न आ रहा है? समर सीज़न आ रहा है, ठीक है। जून में सख्त गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में जून में गर्मी नहीं होती। यहाँ हमारी सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, इनका चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी गर्मियाँ नहीं आ रही हैं, इनकी आ रही हैं सर्दियाँ। यहाँ पे विंटर आने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे समर है, ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? विंटर होगा। और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर होगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे गर्मियों में होता है ना, लॉन्गेस्ट डे, तो लॉन्गेस्ट डे 21 जून को है, तो यहाँ पे तो विंटर है, 21 जून तो यहाँ भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 24 जून को लॉन्गेस्ट डे है
तो यहाँ पे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 21 जून को शॉर्टेस्ट डे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो विंटर है। अच्छा, अब पाकिस्तान में शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर को है, जो कि विंटर में है। पाकिस्तान में नहीं, बल्कि मैं आपको पाकिस्तान का इसलिए बार बार कह रही हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान की विंटर और समर का। पूरे नदर हेमिस्फेयर में यही सिचुएशन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे है, विंटर है, तो यहाँ पे विंटर सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर नहीं होगा, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर होगा। 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होगा हमारा, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट डे होगा, क्योंकि इस समर है। यहाँ पे विंटर है तो यहाँ पे समर है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बट 21 जून in southern hemisphere, 21st June there is shortest day. On 22nd December there is shortest day, but in southern hemisphere on 22nd December there will be longest day because there is summer. Dear students, when the sun reaches its highest point at midsummer and its lowest point at midwinter, both of these times are called solstice. As you know, the shape of earth is sphere, and this is globe. Okay, this is globe. What does globe mean? Globe means the spherical model of the earth, and you can see in this picture, this is also model the globe. Okay, globe means spherical model of the earth. अब जो अर्थ है वो तो ऐसी ही है, ठीक है, स्फेयर है, फ्लैट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे फ्लैट मैप आपको क्यों दिया हुआ है? ये जस्ट आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए, लोकेशन को अंडरस्टूड करने के लिए आपकी बुक्स में इस तरह के फ्लैट मैप होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज स्फेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी हैव 5 oceans and 7 continents. So continent Antarctica, this is continent Antarctica, continent Australia. The old name of continent Australia is Oceania. Continent Antarctica, continent Australia, continent Asia, continent Europe, continent Africa, continent North America, and continent South America. We have 5 oceans: Southern Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean. ओके, इसकी जो ओशंस है इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए, सर्दर्न ओशन, साउथ, सर्दर्न, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि सर्दर्न मतलब नीचे की तरफ। सर्दर्न ओशन, जो नीचे वाले जो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है वो कौन सा है, कौन सा ओशन है? सर्दर्न ओशन। आर्टिक ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। अच्छा, इंडियन ओशन की लोकेशन बहुत इजी है। देखिए, इंडिया बहुत विजिबल कंट्री है ये। इंडिया और इंडिया के नीचे कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। नाउ लुक एट page number 6 and exercise A. In exercise A, you have to match the words with their meanings, and you can, I hope you can match the words with their meaning, because I have already discussed these words meaning. Okay, so next is exercise B. You have to look at the diagram and you know the special words
जो यूज़ होती हैं अर्थ के लिए, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपने जस्ट ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, यू हैव टू पुट दिस वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, ओके। दिस इज़ वेरी इजी, you know, this is axis, this is north pole, this is south pole, this is equator, this is southern hemisphere. Oh, I think this blank should be there, okay, and this is northern hemisphere. Now look at page number 7. In page number 7, simply you have to just write down the oceans, 5 oceans and 7 continents. Thank you for watching the video. Goodbye.